Hello, dear students. Welcome to my Odia classes. Students, आज आम +2 फर्स्ट ईयर कॉमर्स बैच 2024-25 बैच रो क्लास 4 एटा 4 नंबर क्लास बैंकिंग इंश्योरेंस रो आरंभ करिया को जाउछे। टॉपिक होची टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक केते प्रकार अछि तो आरंभ करिया पूर्वरु जो मैंने आम चैनल को नुआ देखुंट सब्सक्राइब कर रखु आओ निजर सांग मानू शेयर करंतु आमर ये चैनल रे क्लास सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होउची आ सांग मानू एथिपई निमंत्रण करंतु। तो जो मैंने आमर पेड बैच रे जॉइन हुआ को चाहते से अकाउंटिंग मैथमेटिक्स आउ बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट ये सब कोर्स प्रोवाइड कराउची। पूरा डिटेल्स नोट सहित पीडीएफ नोट सहित सबु प्रकार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होची। तो से सब्सक्रिप्शन नहीं माई ओडिया क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करने एप्लिकेशन को डाउनलोड करने एप्लिकेशन को डाउनलोड कला कोर्स फी दे अल्प कोर्स फी दे से जॉइन हो आउ नोट्स को आउ क्लास को लाइव क्लास को आसबे। ओके, तो भल भाव प्रिपरेशन करा जाउची तुम मानक पई बहुत कम फीस रे। तो चाहिए चेकआउट कर परिबे जो माने इंटरेस्टेड अछंती आउ जो माने यूट्यूब रे क्लास पढ़िया चाहछंती यूट्यूब रे पढ़ी परिबे। चलतु आज क्लास को आरंभ करवा टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कहले आमर जो बैंक गुड़िक अच्छी डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन आमे शेड्यूल अनुसार दुई प्रकार रे विभक्त करछु बैंक को। गोटे है शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक होची आमर शेड्यूल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेठी आम कहगला शेड्यूल बैंक। ए बैंक मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। एथिरे 3टी कंडीशन रहिला शेड्यूल बैंक पई। शेड्यूल बैंक होबा पई आरबीआई 3टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कहूच 1934 शेड्यूल बैंक ताको कहला। तो तार 3टी कंडीशन रहिला। कौन 3टी कंडीशन? मस्ट हैव ए पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एटलिस्ट 5 लाख। एग्रीगेट वैल्यू रहिबो 5 लाख रो पेड ऑफ कैपिटल जोटाई कहूच। रिजर्व ऑफ एग्रीगेट वैल्यू मिनिमम टा रहिबो 5 लाख। तापरे इट मस्ट सैटिस्फाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट्स अफेयर्स नॉट कंडक्टेड इन ए मैनर detrimental to the interest of its depositors, and it must be a corporation or a company or a state cooperative bank, not a partnership or a single owner firm। देखो पार्टनरशिप ही नथिबो, सिंगल ओनर फार्म ही नथिबो। इट मस्ट बी ए कंपनी ही पारे, कॉर्पोरेशन ही पारे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ही पारे। ए तीनटा कंडीशन रहिले शेड्यूल बैंक कहजबो। आ गोटे कथा द शेड्यूल बैंक अंडर ओब्लिगेशन रही मेंटेन एवरेज डेली बैलेंस कैश रिजर्व विथ आरबीआई which varies between 3% and 15% of their total liability। total liability जेतिक अच्छी 3% और 15% आरबीआई कहूची जे यही बैलेंस डेली बैलेंस कैश रिजर्व टा रखिबो लायबिलिटी रो 3% and 15%।
submit periodical returns to the RBI under various provision of Reserve Bank of India Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949 এই অনুসারে হব। নন শিডিউল ব্যাংক কোন? Non-scheduled banks, on the other hand, are those which are not included in the second schedule of Reserve Bank of India Act. Second schedule Reserve Bank of India Act रे जोटा अंतर्भुक्त होई नथिबो सेटा होची included होई नथिबो second schedule रे सेटा होची non scheduled bank. These banks have no to maintain the cash reserve requirements. या कौनसी reserve रखिबो have to maintain cash reserve requirements but they are not required to keep them with RBI. RBI सहित रखि नथिबे. This bank cannot also borrow from the RBI. RBI ରୁ कौनसी प्रकार टंका धार न नथिबो for normal banking purpose fine, but they may approach the RBI under abnormal circumstances like shortage of funds. बुझे abnormal circumstances क्षेत्र रे shortage of fund क्षेत्र रे होला approach करि परिबो. ये थिला नॉन शेड्यूल बैंक. शेड्यूल बैंक गला, नॉन शेड्यूल बैंक गला. आमे देखिया तापर ओनरशिप अनुसार मालिकाना अनुसार दुईटी बैंक रोचे. गोटे है पब्लिक सेक्टर बैंक आ गोटे है प्राइवेट सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक कहिले जो बैंक गुड़ाक निजस्व मैनेज करुथिबो गवर्नमेंट द्वारा मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. They constitute the dominant part of commercial banking system in India. तापरे government first entered into field with the nationalization of Imperial Bank of India on 1st July 1955 and renamed in the State Bank of India. 1955 रो State Bank of India जन्म नेला, rename hela. This bank has 5 other state banks as its subsidiaries kuagala. In July 1969 14 other large banks 14 bank जोटा कहूचे and 1980 रे 6 more bank are nationalized जातीयकरण होइतिला. Of this, one nationalized bank, namely New Bank of India, was later merged with Punjab National Bank. जो New Bank of India merge हो गला पछरे Punjab National Bank सहित. Thus, we have now a total of 25 such banks in public sector. Public sector रे 25 टा बैंक अछि वर्तमान. Private sector banks. Private sector banks are the banks which are established, managed and controlled by private party. Private party द्वारा जोटा control होउची manage होइची सेटा होउची private sector bank. For starting such banks by private people, permission from RBI is absolutely necessary, and when permitted they are to operate strictly under the provision of Act and under the control and guidance of RBI. Control or guidance रे RBI रो guidance रे चले. The private sector banks started their operation after the issuance of license by the RBI 1994-95. ICICI Bank, HDFC Bank, IDBI बैंक एगुड़ा सब होची प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तापर आसला प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. जेउठी रजिस्ट्रेशन होइथो जागार गोटे हला इंडियन बैंक गोटे आ गोटे हला फॉरेन बैंक. इंडिया रे जोटा होइची आ फॉरेन रे जोटा रजिस्ट्रेशन होइची.
Banks which are incorporated in India and have their head office in India. Incorporated in India and their head office in India are known as national banks and Indian banks. Indian banks may also have their branches abroad. The major part of banking business in India is in the hands of Indian banks. Foreign banks, banks which have been incorporated in foreign countries, have their head office outside but having operational branches in India. माने हेड ऑफिस रहिबो फॉरेन रे, ऑपरेशनल ब्रांचेस रहिबो इंडिया रे, एको कहबा फॉरेन बैंक्स. हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेशनल ब्रांचेस इन इंडिया. They occupy a place of importance in the Indian banking industry. Indian banking industry स्थान पाइछन्ति, especially in the finance of foreign trade and in the field of merchant banking, underwriting and promotion of new capital issue. All foreign banks are scheduled banks. The following are the list of foreign banks. देखो scheduled banks RBI द्वारा रही. ओके, ये सब लिस्ट देखो. बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ कुवैत, बैंक ऑफ बामेन, तापर ये भली भाव में बैंक ऑफ सिलन, बैंक ऑफ नोवास्कोटा, बीएनपी परिवास बैंक, डीबीएस बैंक, डच बैंक, एगुड़ा सब रही. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलाइजेशन, जातीयकरण जोटा nationalized bank, non-nationalized bank. When banks owned and managed by private entities are taken over by the government under its control and management, they are called nationalized bank. जोगुड़ाक private parties द्वारा taken over by the government, and a government undertaking, they are called nationalized bank. First privately owned bank, namely the Imperial Bank of India, nationalized 1955, followed by 14 such private banks in 1969, 1980 and 2003. Non-nationalized bank which are established, controlled and managed by private parties or entities but are controlled and regulated by RBI are non-nationalized or private sector banks. Control managed by private party द्वारा or entity but are controlled and regulated by RBI are called non-nationalized and private sector banks. Okay, ये थिला आजिर टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. आशा करुच्ची भिडियोटी पसंद आसथिबो. जदि पसंद आछि चैनल टी को लाइक करदेबे आ सांग मानक टिके शेयर करदेबे. ओके, तो जेबे भी मु क्लास पठेबी आ तुमे माने याको बुझीबा को चेष्टा करिवो. आउ यार नोट्स जदि पाइबा चाहूच, नोट्स आमर एप्लिकेशन अच्छी, एप्लिकेशन नोट्स पाइज. ओके, आज पे एतिकी रहुची. जय जगन्नाथ.